So let's start the class. So ଏଇଟା ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 12 ରେ ରହିଛି ସାର୍। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଶୋଇଥିବେ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କଲି କାରଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ବସିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ କଲି। ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଡେରି କରିବା ଯଦି 6 AM ରେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିପାରିବିନି ବିକଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସମ୍ ୱାର୍କସ୍। ସାର୍ 5ଟାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ୟେସ୍, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିଲେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ। ସେଇ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ମଚ୍ ମୋର୍ ଗୁଡ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍। ସୋ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ୟୁନିଟ୍ 12A, ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ କିଟୋନ୍। ସୋ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ କିଟୋନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ କିଟୋନ୍? The compounds, the organic compounds, you can note it also. क्लास समय ही तुम्हें नोट डाउन कर परिबो। The organic compounds containing C double bond O, carbonyl, C double bond O, that is your carbonyl। ମୁଁ 4टाରେ ଉଠିକି रिविजन करी क्लास करूची। वेरी गुड श्रावणी, गुड। इट इज द जोश दैट मॉर्निंग रे उठिबार ये होची जोश जे मु 4टारे उठुची। बहुत बढ़िया कथा श्रावणी, कारण मॉर्निंग रे उठिले ही बहुत भल लगे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग C double bond O as functional group are known as carbonyl compound, are known as carbonyl compounds. So carbonyl compounds are also known as aldehyde and ketone, having formula RCHO and RCOR dash respectively. ओके, सो आल्डिहाइड आउ कीटोन होचंदी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गुडाक तुमर CO ग्रुप थिबो ताको हमें कहबा आल्डिहाइड और कीटोन। CO ग्रुप थिले से गुडाक हमें कहबा कार्बोनिल। आउ से मानकर फर्दर जदि RCHO और RCOR डेस हुए वी कैन से देम एज आल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, सो जिबा वी विल गो फॉर IUPAC nomenclature. Give heading, that is IUPAC nomenclature. What is IUPAC? International Union for Pure and Applied Chemistry. So give heading, that is IUPAC nomenclature.
So IUPAC nomenclature रे प्रथम हम देखिबा aldehyde. First we will go for aldehyde. What is the IUPAC nomenclature for aldehyde? The general formula for aldehyde is RCOH or RCHO. Okay. Aldehyde ର general formula होची RCHO, that is the general formula of aldehyde. ठीक अछि. So further if we go for R जगह रे जदि हमें H पकेबा, if we put RH in terms of R, then the molecular formula will be and this is your compound, name of the compound. Give IUPAC name and common name. So molecular formula जदि R जगह में H put करिबा, if we put H in terms of R, we will get HCHO, that is formaldehyde. HCHO, that is your formaldehyde. Your IUPAC name will be, common name will be formaldehyde. Sorry, the common name will be formaldehyde. And another thing, it has a suffix. यार suffix गोटे थिबो और prefix गोटे थिबो. What is meant by suffix and prefix? It has a suffix, that is the suffix is al or aldehyde. Al বা aldehyde যদি last को রহিছি, we can say this is a aldehyde group. Okay. And prefix हमें कौन नहीं परिबा, we can use the prefix, that is your फॉर्माइल. प्रिफिक्स होची या पई फॉर्माइल. जेतेबेले तुमरो गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड थिबो सेतेबेले प्रिफिक्स यूज करा जिवो फॉर्माइल. तो HCHO माने एठी नंबर ऑफ कार्बन केतरा अछि, हाउ मेनी कार्बन आर हियर, हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर. श्रावणी, केतरा कार्बन अछि एठी? 1. So 1 थिले we will put as मिथ. गोटिए ग्रुप थिले we will put it as मिथ. हमें मिथ दबा, राइट. सो इठी हमें मिथ लिखिबा. इट इज अल्केन ग्रुप, सो मिथान, मिथेन. देन यार सफिक्स लिखा है अल, सो मिथेनॉल. इट विल बी मिथेनॉल और मिथेनॉल्डिहाइड और मिथेनॉल्डिहाइड. ठीक अच्छे. फर्दर आर जगह में CH3 पुट करिबा. आर जगह इफ यू प्लेस CH3 C डबल बॉन्ड OH, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. यार IUPAC नेम कौन आसीबो, व्हाट इज द IUPAC नेम फर्दर CH3 CHO हेले. What is the IUPAC name? यार common name, this has common name, that is acetaldehyde. Acetaldehyde, यार common name आसीबो acetaldehyde. But what about its IUPAC name? यार IUPAC name कौन हबो? Next, IUPAC name. What will be the IUPAC name of acetaldehyde? Ethanol. Very good, Pratibha. Ethanol. So this will be ethanol. Further, next C2H5 C double bond OH. What is its IUPAC name? Common name ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାର କହି ଦଉଛି. It is common name, that is your propionaldehyde. फर्दर आम नहीं पार C2H5CHO रो प्रोपानॉल. वेरी गुड प्रतिभा. नेक्स्ट C3H7 C डबल बॉन्ड O CHO, C4H9 C double bond OH, that is
C5H11 C double bond OH. What about the IUPAC name? Common name further. IUPAC name कौन आसिबो first compound रो? Butanal, very good Shravani. Butanal, then next तापरटा कौन आसिबो? Pentanal, butyldehyde. Butyraldehyde. Butyraldehyde. The common name will be butyraldehyde. Pentanal, pentyldehyde. This is your butyraldehyde. Sorry. Hexanal. Very good. And this is pentanaldehyde. And after this common name will be same, and it is your hexanaldehyde. Butanal. It is जदि हमें अलगा ग्रुप नहीं जीवा, like if we place another group, that is your aromatic C6H5 group, and then C6H5CH2CHO group. What will be the name in the first case? First case ro name कौन हबो? What will be the name in the first case? यार कौन आसियो? यार कौन आसियो? What will be the name further? Anyone? प्रतिभा टिके स्पीड अप हो जद्वारा आम अधिक कंटेंट कवर कर तुम मैंने जिते स्पीड अप हम मुझे अधिक कंटेंट कवर करी इन ए क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 0. जिते रेगुलर रहिबो आई विल बी वेरी प्लीजर टुवर्ड्स इट. ओके, या नाम मु कहि दोची. दिस हैज द नेम दैट इज योर benzaldehyde. This is your benzaldehyde. Okay, it is the name that is benzaldehyde. Your name as jiva benzaldehyde, and it has name that is benzenal. It is the name that is benzenal. So what is the common name of benzaldehyde further? The common name will be phenylmethanol, because you will find one CHO and this is phenyl ethanol, right? Phenyl ethanol, and this is your benzenal. This is also benzenal. Is it clear? बुझी पारला समझते? Phenyl ethanol, hexanal. Yes sir. Okay, next we will move towards the IUPAC name of ketone. So it was all about the IUPAC name of aldehyde. Then we will go for ketone. Here is your ketone group.
What is the कि कहि परिबो prefix कोन and suffix कोन for ketone group? It is general formula, that is RCO R dash. What is the suffix and what is the prefix for ketone group? What is the suffix and what is the prefix for this group? Suffix कौन हम ketone group पाई पिला माने कहीं मॉर्निंग रे उठिबा को चेष्टा करो बिकॉज आमे जदि सोउथिबा एभलिया सोई रहिथिबा आ बेसी लेट नाइट जाए पढ़िया अपेक्षा मॉर्निंग रे उठिकी पढ़िबार फ्रेशनेस बहुत अलगा रहिछि प्रतिभा has told keto no suffix will be one and prefix will be oxo. Okay, suffix will be one and prefix will be oxo. ठीक है, good. Then we will go for the IPEC nomenclature further. So molecular formula. Shravani is telling that it has ketone has prefix, that is your ketone has suffix, that is on. Is it clear? Sorry, she is saying that the ketone has suffix, that is keto. Yes, yes, the suffix, that is ketone. Ketone is also another suffix, but there is no keto group. It is just ketone. Sorry for this. Prefix keto or oxo. Prefix keto or oxo. Right. Prefix keto or oxo. Molecular formula. Molecular formula. Then this is your IUPAC name. And another is common name. देखिए पिला जदि 6टा बेले कहंती ताले कालीटू 6 AM रे क्लास करिवा देखिवा molecular formula further r जगह हमें remember we cannot put h in terms of r and r dash because h हमें जदि put करिवा it will be your aldehyde, that is formaldehyde, so we cannot put h here. So the starting compound will be CH3COCH3. The starting compound will be CH3COCH3. Okay, remember this is the starting compound. So CH3COCH3, it has a IUPAC name. It has the IUPAC name, that is your wait. It has the common name, that is acetone. Yara common name hoche acetone. What about its IUPAC name? If we go for numbering the carbons, then you can see 1, 2, 3. 3 carbons are here. That's why college rochi, so a time ta thik achi. Okay, Shravani. So there are 3 carbons. That's why if we see here propane 2N. Very good, Nikki. So as there are 3 carbons, that's why you can put propane and in 2, that is 2ONE. So it will be propane 2ONE or 2-propanone. The compound will be 2-propanone further. Okay, very good. Pratibha and Nikki, both of you have done a good work. Next we will move towards C2H5 COCH3.
Dimethyl ketone, it is the common name. Very good. It is the common name, that is dimethyl ketone, because if you see here there are two methyl groups. It is dita methyl group roichi gote ketone ro this side re, that's why it is dimethyl ketone. Okay, C2H5 COCH3, C3H7 COCH3. What about its common name further? ଏମାନଙ୍କର common name କ'ଣ ହବ? Butane 2ONE. Pratibha has told it has common name, that is IUPAC name, that is butane 2ONE. Very good. Or 2-butanone. Further a compound ର IUPAC name is your pentane 2ONE. It has IUPAC name, that is pentane 2ONE. Further यार भी तुम्हें যদি देखिबा it has common name, that is मिथाइल इथाइल कीटोन. सो आम अल्फाबेटिकली आग लिखिले इथाइल, इ प्रथम लिखा इथाइल, then methyl ketone alphabetically. If you write here ethyl methyl ketone. Further pentane 2ONE ra it will be propyl methyl, no, it will be methyl propyl, because M first then propyl, methyl propyl ketone. ना आमे we cannot put propanone. प्रतिभा propanone बोलिकी आमे लिखि परिबा नाही. We cannot put propanone because for propanone it will be your number रहिबा दरकार. ketone group कोठी रछि, you have to, you should maintain the number further. Another is Cl CH2 C sorry eta pore kariba. We'll go for another question. C6H5 CO CH3, 5CO C6H5, that is your benzene. Okay, what about its name further? यार नेम कौन हम? इथाइल प्रोपाइल कीटोन. yes, इथाइल प्रोपाइल कीटोन. इथाइल प्रोपाइल कीटोन, no, there is no ethyl propyl ketone. मु फर्दर आउ करिनी, आउ ताको आगु बढ़ेनी. I just covered that, सेटिंग कवर कर देछि. Acetophenone, very good. The name will be your acetophenone. Any name, okay, it has name, that is acetophenone. Next, and another name will be your benzyl methyl ketone or phenyl methyl ketone. Which name will be more applicable? Phenyl methyl ketone or benzyl methyl ketone? Could have answer. Benzyl methyl ketone or phenyl methyl ketone? The name will be your benzyl methyl ketone. Common name will be benzyl methyl ketone. Okay. What about next one? Yana कौन होबो? Next कौन होबो yana? What about the next name? तुम्हें माने लिखु थाओ प्लस आंसर कर थाओ, अदरवाइज यू मे लूज. सो क्लास करबा समय ही आंसर लिखि दियो, सो दैट इट विल बी मोर इजियर टू यू.
the name for this compound will be your a compound by name आसीबो हमरो benzophenone. Okay, this is your benzophenone, and further it is the common name that is your dibenzyl ketone. As you can see there are two benzyl groups, that's why dibenzyl ketone, and this is your this has the name that is benzanophenone. Okay, or you can say this is your this compound has name that is your uh, benzyl benzyl ketone. Benzyl means CH2 जदि रहिबो you can say it as benzyl. Okay, जदि CH2 रहिबो leave it. जदि तुम ए जिनसटा न बुझी परछो it is not necessary for our CHC. ए भलिया कंपाउंड बहुत कम रहे, leave it if you could not understand. Then we will go for एठी हमर सरला IUPAC name. I am not spending more time for IUPAC nomenclature. Next we will go for method of preparation. Okay, so method of preparation, first we will look towards from alcohol. It is from alcohol, one number, that is from alcohol. So you can have the name जे alcohol रे हमें लिख परिवा that primary alcohol and secondary alcohol, primary alcohol and secondary alcohol undergo oxidation in presence of oxidizing agent like KMNO4, acidified KMNO4. These are the oxidizing agent. मन रखो acidified potassium permanganate or acidified K2Cr2O7, that is potassium dichromate, to produce aldehyde and ketone respectively. So माने aldehyde और ketone देवे को गुड़ाक ना primary और secondary alcohol गुड़ाक aldehyde and ketone respectively. They will produce aldehyde and ketone respectively. So what about its further reaction strategy? So reaction strategy जदि हम देखिबा, we can have that RCH2OH याको जेतेबेले हमें ऑक्सीडाइज करिबा, remember whenever we oxidize it using KMNO4 or acidified K2Cr2O7, here dita hydrogen remove हो जिवो plus oxygen एठी add हो जिवो. So you will get a byproduct, as you will get a main product, that is RCOH plus H2O. How can you remember this? Now you can see that एठी तुम्हारा गोटे H अच्छी, एठी गोटे H अच्छी. Okay, एठी गोटे H अच्छी, एठी गोटे H अच्छी. So ये दीटा H बाहरी गला और एठी गोटे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गला. ये दीटा H बाहरी गला और एठी गोटे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गला. फर्दर से दीटा H ऑक्सीजन सहित मिसिकी तुम्हारा H2O दे देला. ठीक अछि. एई भलिया तुम्हारा
alcohol ରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା we will get the aldehyde from alcohol ठीक ଅଛି then another reaction is RCH ROH plus H2O ROH RCHO হবনি কি further another reaction is RCH2R dash because it is your secondary alcohol माने it will be like this ए भलिया हबो ये गला प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को भलिया हबो CH R dash ROH ओके so total आम देखिबा चारटा ग्रुप RCH R dash OH this is your secondary alcohol which undergo oxidation in presence of acidified K2Cr2O7 that is K2Cr2O7 ଆଉ H2SO4 देले acidify हिजबो to produce the compound that is RCOR dash plus H2O plus H2O as byproduct okay so this is the general methodology for how can you prepare aldehyde and ketone from alcohol next is you can put CH3 or H in terms of R तो प्रथम आम प्राइमरी अल्कोहल रे CH3 पुट करिवा सॉरी H पुट करिवा so H CH2OH further CH3 CH2OH further C2H5 CH2OH then C3H7 CH2OH okay सेगुडा को हमें कौन करिवा we will oxidize them also there is C4H9 C4 no benzene दे देवा CH2OH okay further we will go for oxidizing them so we will use the nascent oxygen यूज करिवा तार अर्थ बहुत मात्रा रे हमें ऑक्सीजन को कौन करिवा यूज करिवा सो प्रथम केस रे कौन आसीबा प्रोडक्ट जेतोले हमें KMNO4 यूज करिवा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन द फर्स्ट केस सेकंड केस रे कौन आसीबो फर्स्ट केस रे कौन आसीबो को गोटे गोटे आंसर को व्हाट विल बी द आंसर इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राई टू गिव द आंसर फर्दर प्रत्येक रा आंसर कौन हम सो जदि हमें SCH2OH कथा कहबा एठी तुमारो दिस ग्रुप विल बी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड ए कंपाउंड रो नेम विल बी योर मिथानॉल व्हाट हैपेंस व्हेन मिथानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड मिथानॉल को जितेबाला आम ऑक्सीडाइज करवा से आम कौन पाइबा पुणी इथानॉल को जितेबाला आम ऑक्सीडाइज करवा से कौन पाइबा व्हाट विल बी द आंसर प्रोपानॉल को जितेबाला आम ऑक्सीडाइज करवा व्हाट विल बी द आंसर व्हाट हैपेंस व्हेन ब्यूटानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड फर्दर एंड व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड फर्दर इट इज नॉट फिनॉल इट इज योर बेंजाइल अल्कोहल is oxidized further कौन आसीबा प्रोडक्ट फर्स्ट केस रे समस्त सुनी परछ आई थिंक वॉइस तो कटुनी आई थिंक नो कौन हम प्रोडक्ट तो आम कहि दोछ SCH2OH या जेतले ऑक्सीडाइज करबा यूजिंग KMNO4 SCHO वेरी गुड श्रावणी प्लस H2O तो फर्स्ट आसीबा SCHO that is SCHO plus H2O and this compound will be your the name of the compound will be formaldehyde तापर एडी आसीओ CH3 C double bond O CH3 CHO further एडी आसीओ C2H5 C double bond O that is C2H5 CHO C3H7 C double bond O CHO further C double bond O
CHO, sorry, C double bond OH, that is CHO. So what is the name of the first compound? First compound ro na kon habo? What will be the name further? The name will be your formaldehyde বা methanol. Methanol is the IUPAC name and formaldehyde is the common name. And this is acetaldehyde, that is the common name, and ethanol is the IUPAC name. Further, this is your propanaldehyde is the IUPAC name, sorry, common name, and propanol will be the IUPAC name. This is butyraldehyde is the common name, and butanol will be the IUPAC name. Eighty kon asibo, this will be your benzaldehyde. The compound, the name of the compound will be benzaldehyde. Okay, এই compound ର ନାଁ କ'ଣ ଆସିବ? benzaldehyde. Is it clear? କାହାର କିଛି doubt ଅଛି? If you have any doubts, please ask me. ଯଦି clear ହେଲା, please tell me that yes sir, it is cleared. Yes or no? ଯଦି doubt ଅଛି, sir ଟିକେ wait. Okay, I am waiting here. Waiting. तो तुम्हें देखिपर मिथानल को जितेबाला येस सर मिथानल को जितेबाला प्राइमरी अल्कोहल यहाँ गोटे बहुत बड़ यूजफुल रिएक्शन या ऊपर बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन आसे माने आमर जदि आम CHSC लॉन्ग क्वेश्चन को जीवा या को बेस करी कौन थी ना बहुत सारा क्वेश्चन थी जोटी तुम यहाँ 1 to 2 मार्क कैरी कर किंतु ए क्वेश्चन को निहाती भाव आमर माइंड रे सेटअप हो दरकार जे KMNO4 बा एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज कले तुम अल्कोहल रु अल्डिहाइड आसीबो बट द अल्कोहल मस्ट बी योर प्राइमरी अल्कोहल होइतिबा दरकार सेकेंडरी अल्कोहल हेले कीटोन आसीबो सो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले यू विल गेट द अल्डिहाइड फर्दर ओके then what about the secondary alcohol? It is in the primary alcohol he gala a reaction complete he gala next we will go for this secondary alcohol se bole ame put kariba Saravani, is it clear? CH3 remember secondary alcohol pai हमको minimum R और R dash जगह रे तुमको करना पड़ियो CH3 put करिवा पड़ियो there is no alternative further so CH3 then C2H5 CHOH further CH3 C3H7 CHOH next CH3 there is your benzene CHOH ऑक्सीडाइज करवा आम ए अल्कोहल गुटा को दीज आर द सेकेंडरी अल्कोहल्स ओके यूजिंग एसिडिफाइड K2CO2O7 दैट इज योर आम नहीं पारिबा H2SO4 प्लस K2Cr2O7 H2SO4 नबा जोड़ा कि एसिडिफाई करबा मीडियम टाको देन K2Cr2O7 remember H2SO4 और K2Cr2O7 these are sorry acidified potassium dichromate is an oxidizing agent so you should have clear data that acidified K2Cr2O7 is an oxidizing agent KMNO4 is also an oxidizing agent even sulfuric acid also act as oxidizing agent but in rare case it happens so but you can use that this acidified K2Cr2O7 as your oxidizing agent so it हमें further जदि हमें नबा
what will be the name of the compound? CH3 CH3 plus H2O. CH3 COCH3. Okay, CH3 COCH3. এই কম্পাউন্ডর না কোন হবো 1 2 3 তিনটা কার্বন আছে, সো দিস উইল বি ইয়োর প্রোপেন 2OL, প্রোপেন 2OL। তো এই কম্পাউন্ড গুড়াক না সমস্তে মতে কুহ কোণ হবো, হোয়াট উইল বি দ্য নেম অফ দ্য কম্পাউন্ড, or we can say propyl alcohol, propyl alcohol भी कहि परिबा, propyl 2 propane 2OL, this is the common name, sorry IUPAC name। propane 2OL होची तुम्हारा IUPAC name put कर देबा। so next CH3, then this is CH3, एटी CHOH बदल रे हमर हे जिवो CO, कारण एटी गोटे H एठू गोटे H बाहरी की पळेबो। ओके, तुम्हारा এইটু গোটে H বাহারিকি পଳେଇବ, ଯାଦ୍ୱାରା ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ this hydrogen, and this hydrogen will be removed further। okay, further ଏଇଠି ଆସିବ CH3 C double bond O C2H5, then CH3 C double bond O C3H7, further CH3 C double bond O benzene plus water as byproduct। remember ଏଇଠି water ଯଦି byproduct होची ब्यूटेन 2OL, very good श्रावणी एंड निकी। वाटर जदि बाय प्रोडक्ट होची ताहले तुम्हारा नेसेंट ऑक्सीजन यूज होची, बट इफ H2 इज ए बाय प्रोडक्ट देन नो नेसेंट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, सेटा हमें देखिबा, दैट इज नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। तो ऑक्सीडेशन गोटे, डिहाइड्रोजनेशन गोटे, दिटा अलगा अलगा जिंस। सो एठी आ गोटे जिंस हमें ऐड करबा फ्रॉम अल्कोहल by means of oxidation, by oxidation। आउ गोटे भी देखिबा from alcohol by means of dehydrogenation, it is also important, catalytic dehydrogenation। so further the name will be, this is butane 2OL, very good Stravani and Nikki, and this is your pentane 2OL, pentane 2OL or 2-pentanol, and this compound is your further ए कंपाउंड ना कौन हम, मिथाइल बेंजाइल मिथेनॉल, or what will be the name further, butane 2OL, the name will be your movie टिके कंफ्यूज होची, बेंजाइल sorry 1-benzyl ethanol, 1-benzyl ethanol और 1-benzyl ethanol। तो जदि हम देखिबा एटा गोटे इथेनॉल ग्रुप, केमदी याकू इथेनॉल बोली कहि परिबा, दिस इज 1 2, ठीक अछि 1 2 हेले ए ग्रुपटा को, पूरा ग्रुपटा को हमें इथाइल ग्रुप कहि परिबा, ठीक अछि। देन 1 पोजीशन रे बेंजाइल अछि, सो 1-benzyl ethanol, द नेम विल बी 1-benzyl ethanol, एंड ए कंपाउंड रो नेम हबो योर एसीटोन और प्रोपेन 2ONE, ए कंपाउंड रो नेम हबो ब्यूटेन 2ONE और इथाइल मिथाइल कीटोन, ए कंपाउंड रो नेम हबो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन और पेंटेन 2ONE, दिस विल हैव पेंटेन 2ONE। ए कंपाउंड रो ना हबो एसीटोफेनॉन,
नेक्स्ट आम जदि दीटा बेंजीन ग्रुप रखा C6H5 and another C6H5 then CH2OH या जो आम ऑक्सीडाइज करवा यूजिंग KMnO4 what will be the product ये तुम्हारा प्रोडक्ट कौन आसो दिस इज योर बेंजोफेनॉन द प्रोडक्ट विल बी योर बेंजोफेनॉन okay the product will be benzophenone further और डाइबेंजाइल कीटोन भी होगा बेंजोफेनॉन और डाइबेंजाइल कीटोन बेंजोफेनॉन और डाइबेंजाइल कीटोन एंड दिस इज योर डाइबेंजाइल मिथानॉल दिस इज डाइबेंजाइल मिथानॉल मिथानॉल एइथिपई कारण हमर ए ग्रुपटा पई वी विल हैव द नेम दैट इज मिथानॉल यार दीटा बेंजीन ग्रुप थिबा जोगु दिस विल बी डाइबेंजाइल मिथानॉल इज इट क्लियर मु किछि एग्जांपल बर्तमान दोची बर्तमान तुम काम हला याको ऑक्सीडाइज कले हमें कोन कोन पाइबा कहबो ठीक अछि द क्वेश्चन इज मु किछि एग्जांपल नेबी यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द आंसर फर्दर yes this is your butane 1OL not 4OL butane 1OL butane 2OL pentane 3OL 1 pentanol next बेंजाइल मिथानॉल बा 1 बेंजाइल मिथानॉल कौन आसीबा प्रोडक्ट एठी फर्स्ट केस रे जेतोले हम ऑक्सीडेशन करबा कौन आसीबा प्रोडक्ट एगुडा को आंसर को दिस आर द आंसर्स ऑफ दिस these are the practice based questions so what will be the product here first case रे कौन आसीबो प्रोडक्ट सेकंड केस रे कौन थर्ड रे कौन प्रथमे फर्स्ट रे कौन आसीबो प्रोडक्ट को ब्यूटेन 1OL को जेतबेले हम ऑक्सीडाइज करबा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ब्यूटेन 1OL को जेतबेले हम ऑक्सीडाइज करबा प्रोडक्ट कौन आसीबो यू नीड नॉट टू राइट दिस जस्ट यार आंसर केवल को कारण ए सब एग्जांपल आम ऑलरेडी कर सारी केवल आंसर को व्हाट विल बी द आंसर ब्यूटेन 1OL को जेतबेले आम ऑक्सीडाइज करबा सेतबेले कौन आसीबो आंसर कौन हबो प्रोडक्ट यूजिंग KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्यूटानॉल नो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट मते केवल डायरेक्ट प्रोडक्ट दरकार कौन हबा प्रोडक्ट ब्यूटेन 1OL को ऑक्सीडाइज करबा ब्यूटेन 2OL को ऑक्सीडाइज करबा पेंटेन 3OL को ऑक्सीडाइज करबा 1 पेंटानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड 1 बेंजाइल मिथानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड तो एग्जाम रे एभला डायरेक्ट थिबो कोनसी स्ट्रक्चर नै दे नथिबो से अनुसार हमको आइडेंटिफाई करिया को पड़िबो what will be the answer if we choose butane 1OL what will be the answer if we choose butane 2OL pentane 3OL etc so first question रो first answer कौन हबो butane 1OL को C3H3CO plus H2O no this is not the right answer श्रावणी butane 1OL को ऑक्सीडाइज कला में कौन पाइबा speak out what will be the product if we oxidize butane 1OL butane 1OL को ऑक्सीडाइज कला में कौन प्रोडक्ट पाइबा
ब्यूटेन 1 ऑयल को ऑक्सीडाइज कले व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? एनीवन कुह एटलिस्ट ट्राई टू सॉल्व द आंसर. ब्यूटेन 1 ऑयल को ऑक्सीडाइज कले हमें कौन प्रोडक्ट पाइबा? देन तापर हमें ब्यूटेन 2 ऑयल केस को आसीबा. बट व्हाट अबाउट ब्यूटेन 1 ऑयल? ब्यूटेन 1 ऑयल को ऑक्सीडाइज कले हमें कौन पाइबा? के भी को ओके इट इज टेकन एज होमवर्क फॉर यू. ब्यूटेन 1 ऑयल को ऑक्सीडाइज कले कौन आसीबो प्रोडक्ट? दिस इज ए होमवर्क फॉर यू. सो नेक्स्ट क्लास रे यार आंसर कहबो. ओके ब्यूटेन 1 ऑयल को ऑक्सीडाइज कले कौन आसीबो प्रोडक्ट? दिस इज द होमवर्क फॉर यू and you have to tell the answer in the next class. Okay ठीक अछि. मु नेक्स्ट क्लास रे चाहिए जे बहुत अधिक अधिक पिला जमी जॉइन कर क्लास रे सो दैट क्लासटा आउर इजी हम. 5टा ରୁ 6टा ही रखा श्रावणी रिक्वेस्ट कले ना. जदि तुम जदि 5टा बेले असुविधा होची वी कैन यूज फॉर स्विच फॉर 5:30. किंतु कौन हम ना क्लास रही कहले पिला उठा इंटरेस्ट आसो. फॉर्माल्डिहाइड ब्यूटानॉल. फॉर्माल्डिहाइड अलगा निकी एंड इट इज ब्यूटानॉल. ब्यूटानॉल इज द राइट आंसर. ये ब्यूटानॉल आसो ठीक आंसर. तो जो मैंने भी क्लास करि पारि नाहंती जदि तुमर सांग साथी केही भी क्लास करि पारि नाहंती सेमान को कहि दियो जे मॉर्निंग रे एमदी गोटे क्लास होची 5 AM उठिया पई सुविधा हबो आ क्लास करिया को बहुत इंटरेस्ट आसीबो मॉर्निंग रे क्लास हले. किंतु जदि तुमे सेटा लेट आवर रे रहइबो लाइक 6 AM बहुत पिलांगु भी असुविधा लाइक श्रावणी भी कहतले असुविधा. बट जदि तुमर असुविधा अछि वी कैन गो फॉर 5:30 AM आल्सो. द प्रोडक्ट विल बी ब्यूटानॉल not butanol. This is your butanol hijo butanol. सो मु आउ थे कही रखुची जदि पिला माने जो माने भी चाहूच जे मॉर्निंग क्लास यू कैन जॉइन अप विथ मी बट द टाइम विल बी एट यूजुअल दैट इज योर 5 PM सॉरी 5 AM 5 AM. हाँ इट मे बी आउ अध घंटा डेरी रे क्लास हो पारे राइट. ओके अध घंटा डेरी रे क्लास हो पारे बट यू शुड बी अलर्ट दैट द क्लास विल बी टेकन एट 5 to 5:30 AM डेली. सो से अनुसार समस्ते प्रिपेयर होगी रुह जद्वारा मॉर्निंग उठिबार भी अभ्यास हम. मॉर्निंग उठी सारा पर क्लास कला पर ओबियसली भल लगिला पुणी आउ थे तुम्हें पढ़ार बस. अदरवाइज तुम टाइम जदि मॉर्निंग रे उठिबार अभ्यास न रहिबो ताहले यू मे लूज सो मेनी थिंग्स. That's why I am telling like this. जदि नहला हम 5:30 to 6:30 रखिबा टाइमिंग फॉर स्टडी. बट सो मेनी स्टूडेंट्स सेकेंड टा CS3 CO C2 S5 वेरी गुड. व्हाट इज द नेम फर्दर? ओके ए जिनसटा टास्क रोची फॉर टुमारो. इट इज ए होम टास्क फॉर यू दैट व्हाट विल बी द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू टेल. ठीक अछि ये गोटे टास्क रहिला. ये सबुडा आंसर तुम्हें नेक्स्ट क्लास रे कहबो. ठीक अछि. थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द क्लास एंड आई विश ऑल द स्टूडेंट्स कैन ब्यूटेन टू विन वेरी गुड. अन्य माने समस्ते तुमरो सांग साथी मानन को जेमदी इन्फॉर्म करिवो फॉर दिस क्लास सो दैट वी कैन बी अलर्ट फॉर दिस एंड इट विल बी मोर इजियर टू देम टू अंडरस्टैंड द क्लास. It is applicable both for CHSE 2022 2023 also. कारण 2023 एमदी बैच स्टार्ट हो गलानी सेकेंड ईयर बहुत जगह आ 2022 एग्जाम एवं हम आगू डेरी रे अच्छी एप्रिल लास्ट वीक एप्रिल 28 रु जोटा स्टार्ट हम से बोथ द क्लासेस बहुत हेल्पफुल हम Aldehyde and Ketone चैप्टर टा. ओके थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द क्लास. थैंक यू अगेन.